The majority of cases that we see in our OPD of diabetes are the type 2 diabetes. Namaskar, I'm Dr. Shweta, Senior Consultant Endocrinology and Diabetes at Zyla Health. So what is diabetes? Diabetes अगर हम समझना चाहते हैं तो it is increase in the blood glucose level in our body. So where this glucose enters in the body, glucose आता कहाँ से है, glucose जाता कहाँ है, utilize कहाँ होता है, और डायबिटीज़ में ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है कि ये blood glucose level increase होने लग जाता है. Now the food that we eat, especially the carbs content in our diet, it breaks up into glucose, and this glucose enters the bloodstream. From this bloodstream, it has to go to the cells, and this cell will utilize the glucose and produce energy for our body functions to work. Now, for simple understanding कि blood stream से cells के अंदर glucose कैसे गया, let's take an example. Suppose we have a car which is representing our cell, और पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग ग्लूकोज इन आवर ब्लड. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल जाए और गाड़ी चले तो व्हाट वी वांट अ की, जिससे कि हम पेट्रोल टैंक को ओपन करें और उसके बाद पेट्रोल कार के अंदर जाएगा और तभी हमारी कार चल सकती है. सिमिलर वे इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड ग्लूकोज ट्रेवल, सो येस, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इट हैज़ टू गो इनसाइड द सेल. अब यहाँ हमारी बॉडी में चाबी कहाँ से आई? द की दैट वी वॉन्ट टू अनलॉक द सेल इज द इंसुलिन. इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम अ मेजर ग्लैंड इन आवर बॉडी दैट इज pancreas. So the insulin that is secreted from the pancreas, it opens the cell. From bloodstream the glucose enters the cell, and from here it will be utilized and the body will function. But in diabetes what it actually happens? In this situation of diabetes, either the keys are not functioning properly or the keys are produced in less number. So ultimately what happens, धीरे धीरे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लग गया. अब हम ये समझते हैं कि ये कौन से दो कारण हैं. पहला, जैसे हमने बात की कि या तो कीज़ हमारी बॉडी में कम बने, या फिर कीज़ बने या तो वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो रहे हैं, या तो वो प्रॉपरली ओपन नहीं कर पा रहे हैं. द मेजर ईटियोलॉजी और द कॉज फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, why it happens in our body? It is because of the faulty eating habit. It is about the sedentary lifestyle, and because of that we are gaining weight, especially the weight that we gain around our abdomen. So these are the major contributory factor for the development of type 2 diabetes. But in combination with the insulin resistance, we do witness a decreased amount of insulin secretion also in type 2 diabetes. That's why we term diabetes as a progressive nature of the disease.